ओके मेरी आवाज आ रही है? Okay. Pero tu abre, tu que abre, mere da pat per certo, non come così. Quello giodi. Okay. तो what I was saying कि अगर ये स्टार होल्ड करती है, we show that f is continuous at x naught. We show that f is continuous at x naught. Now assume to the contrary, it's not. Assume to the contrary, f is not continuous at x naught. Then for some epsilon positive, मतलब definition क्या है continuity की? Continuity की definition ये है कि for any epsilon positive, there exists some delta positive such that f of x minus f of x naught is less than epsilon whenever for all x minus x naught less than delta. तो अगर ये कंटिन्यूअस नहीं है तो इसका मतलब कोई एप्सिलॉन ऐसा है जिसके लिए ये ट्रू नहीं है. So there should be some epsilon such that there exists for some epsilon there exists no such delta positive such that f of x मतलब ये कंडीशन होल्ड नहीं करती किसी एप्सिलॉन के लिए. Whenever x minus x naught is less than delta. So which means that for every delta positive, now we have some epsilon and for some epsilon positive, f inverse of f of x naught minus epsilon f of x naught plus epsilon does not contain, ये नहीं करता contain the interval x naught minus delta, x naught plus delta for any delta positive. For some epsilon positive, there exists no delta. Now this should be, now this is the meaning of this. Okay, so choosing delta equal to 1 by n, that means for delta choosing, we can choose because this is not true for any delta positive. So in particular, I can choose delta equal to 1 by n because this is just a positive number. 1 by n also a positive number, where n is a natural number. So we may choose, then that means what? That means x minus x naught is less than 1 by epsilon. We can choose and something here such that मतलब इस इंटरवल के लिए ये ट्रू है. f of x minus f of x naught is bigger than or equal to some epsilon positive. मतलब उल्टा उसका जो ना कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है. So therefore we can choose this interval such that whenever x minus x naught is less than 1 by n, we have f of x minus f of x naught greater than equal to for some epsilon positive. So that is, अगर x belong करता है x naught minus 1 by n, x naught plus 1 by n, we have f of x minus f of x naught is bigger than equal to epsilon.
So what we do now, this means that x can belong to n. These are actually many deltas. I can choose delta now 1. Delta can also be 1/2. Delta can also be 1/3. कोई भी delta इनमें से चल जाएगा. तो इसका मतलब मैं लूंगा अगर x belong करेगा x नॉट -1, x नॉट +1, क्योंकि 1/n के बहुत सारे वैल्यूज हैं. x अगर बिलोंग करेगा x नॉट 1/2, -1/2, x नॉट +1/2, मतलब इन सब में अगर कोई x होगा तो वो इस प्रॉपर्टी ये उसके लिए मतलब दिस शुड बी ट्रू. तो इस x को जो इसमें बिलोंग करेगा उसका नाम रखूंगा मैं x1, इसका नाम रखूंगा मैं x2. इन दिस वे आई कैन फाइंड अ सीक्वेंस such that f of xn minus f of x naught is bigger than equal to epsilon. So उसी से हमारा वो मतलब we choose xn belonging to x naught minus 1/n, x naught plus 1/n, such that for all the sequence f of xn minus f of x naught is bigger than equal to this epsilon, for some epsilon. So which implies that अगर ये इसमें है, it means that xn minus x naught is less than 1/n. For all n belonging to such natural numbers, such that f of xn minus f of x naught. हेलो, ये चल रहा है? हाँ ठीक है, आ गया. Okay. So this is bigger than or equal to epsilon. But this implies, इसका मतलब क्या है? अगर x naught minus x naught is less than 1/n, it means that this can be made arbitrarily small for a large value of n. It implies that limit n approaches infinity, xn is actually equal to x naught. Right? Because this can be made less than any positive number for a large n. So, but ये मतलब ये रखता है कि मतलब लिमिट n approaches n infinity, f of x naught n जो है it is not equal to f of x, क्योंकि it should have been मतलब it should be less than any epsilon if this has to converge, लेकिन ये bigger than equal to this epsilon है तो ये इसके बराबर नहीं है, which is a contradiction to star, which is a contradiction to our supposition that star holds, हमारी जो condition है. So therefore हमने जो माना, therefore f must be continuous. F must be continuous at x naught. तो ये था वो जो हमारा थ्योरम का आधा हिस्सा रह गया था. इसके बाद भी कंटिन्यूटी से रिलेटेड हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं, कर सकते हैं. ओके, कहाँ गया ये शेयर स्क्रीन, पता नहीं कहाँ चला गया. So इसके बाद जो है कि अगर कोई फंक्शन है कंटिन्यूअस और क्लोज्ड इंटरवल, जैसे मैंने कहा था हमने डिफाइन किया फंक्शन व्हेन इट्स एन ओपन इंटरवल, राइट. हम कह रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस है एट अ पॉइंट. मैंने ओपन इंटरवल मैंने कहा था कम से कम एक ओपन इंटरवल होना चाहिए फॉर द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट. तो हमने कहा था दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस at some x naught belonging to AB if for any epsilon positive there exists a delta positive such that f of x minus f of x naught is less than epsilon for all x's with this property, x minus x naught is less than delta, or f of x ऐसे भी कर सकता हूँ belongs to f of x minus epsilon f of x naught plus epsilon for all x's belonging to x naught minus delta x naught plus delta. Now this is the definition of continuity
for any point inside, right? Now suppose that I have got a function that is defined on this closed interval AB. यानी मुझे जो information है वो मुझे इस इंटरवल के बारे में है कि फंक्शन क्या करती है इंटरवल के साथ फ्रॉम A to B, यानी आई हैव नो इंफॉर्मेशन हियर. A से पहले और B के बाद जो है वैल्यूज उनके बारे में आई हैव नो इंफॉर्मेशन, क्योंकि मेरी डोमेन ये है. नाउ इन एंड पॉइंट्स पे फिर हम कंटिन्यूटी कैसे डिफाइन करें? क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ अगर मैं देखूं तो मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए f of x के बारे में on a point x naught in this neighborhood, f of x naught plus epsilon, है ना, और f of x naught minus है, इसके नेबरहुड दाएं बाएं मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए टू अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी. लेकिन सपोज अगर इसकी जगह b है, आई नो नथिंग अबाउट, सपोज x naught is equal to b, तो दैट और मेरा डोमेन ये है, तो व्हाट इज f of x naught, या अगर मैं कहूँ व्हाट इज x naught plus delta, मतलब x naught plus delta अगर x naught b है, I have no information about that, मतलब इसका क्या होगा, राइट? तो इसलिए हम डिफाइन करते हैं एंड पॉइंट्स के लिए, we say f is continuous at this end point A if it is right continuous there. मतलब यहाँ हम सिर्फ राइट कंटिन्यूटी देखेंगे, लेफ्ट जो छोटा वाला नंबर है इस इंटरवल में एंड पॉइंट, एंड f is continuous at B, तो हम मानेंगे if for enclosed interval end points के लिए if it is left continuous there. और लेफ्ट कंटिन्यूस और राइट कंटिन्यूस का मतलब क्या है? लेफ्ट कंटिन्यूस का मतलब सिंपली ये है कि जब मैं कह रहा हूँ f अगर एक कोई फंक्शन है on a closed interval a b to r, now f is continuous in this, हम मानेंगे continuous at a at the end point if it is left continuous, right continuous at a. By that I mean limit x approaches to a from right, f of x is equal to f of a. इसी तरह से f is continuous at the end point b if it is left continuous, only left continuous at b, that is limit x approaches to b from left, f of x is equal to f of b. तो एंड पॉइंट्स के लिए ऐसे हम डिफाइन करें, क्योंकि हमें इसके बारे में पता ही नहीं, ए की लेफ्ट पे और बी के राइट पे क्या हो रहा है हमें कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, क्योंकि हमारी जो फंक्शन डिफाइंड है वो है ऑन दिस क्लोज्ड इंटरवल. और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट्स अ डेल्टा पॉजिटिव सच दैट इंटरवल a plus delta, या यूं समझ लो f of, should I write like this, there exists a delta positive such that f of x belongs to f of a minus epsilon, f of a plus epsilon whenever x belongs to a plus delta. मतलब यहाँ इससे पहले वाली डेफिनेशन में जो बीच का पॉइंट है इंटीरियर, उसके लिए आता था a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, तो यहाँ पे आएगा सिर्फ राइट वाला लिमिट, तो सिर्फ राइट हैंड से हमें वो ओपन इंटरवल लेना होगा. सिमिलरली हियर, सो fx बिलोंग्स टू, इसका मतलब ये है f of b minus epsilon f of b plus epsilon for all x belonging to आएगा b minus delta b plus b. लेफ्ट में मतलब जो इसका लिमिट है वो लेना है हमें, तो लेफ्ट से हमें इंटरवल लेना होगा अराउंड बी, नॉट राइट, क्योंकि राइट से हमें कुछ पता ही नहीं. यानी इसका मतलब है राइट कंटिन्यूअस और लेफ्ट कंटिन्यूअस फॉर एंड पॉइंट्स. इफ द फंक्शन, जब हम कहेंगे फंक्शन जो है इट्स कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल, दैट्स व्हाट वी मीन. इंटीरियर पॉइंट्स की तो डेफिनेशन कंटिन्यूटी यही है, लेकिन एंड पॉइंट्स में उसका मतलब ये है, क्योंकि वहां पे राइट और लिमिट लेफ्ट से हमें पता नहीं फंक्शन के बारे में. ओके, सो व्हेन आई ना, अगर मैं कहूंगा कि f is continuous
on an interval AB, मेरे कहने का मतलब है f is continuous at every point of open interval AB, and f is right continuous at A and left continuous at B. मतलब जब मैं कह रहा हूं कोई फंक्शन है कंटिन्यूअस ऑन दिस क्लोज्ड इंटरवल, तो उसका मतलब है जो इंटरनल है, इंटरनल पार्ट ऑफ द इंटरवल है, एंड पॉइंट्स को छोड़ के, वहां पे वो पूरी की पूरी कंटिन्यूअस है, लेकिन ये जो ए है इस पे वो राइट कंटिन्यूअस है और बी जो है इस पे वो लेफ्ट कंटिन्यूअस है। सो ये इसके बारे में हम एक रिजल्ट करेंगे कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है ऑन क्लोज्ड इंटरवल, देन इट वुड बी अ बाउंडेड फंक्शन देयर। मुझे लगता है अब लेस देन 1 मिनट है, सो लेट्स एंड इट हियर। तो इंशाल्लाह कल देखेंगे, इससे आगे करेंगे। और अपने वो क्वेरीज वारीज नोट करके रखा करो, हम बीच बीच में ऐसे लेक्चर करेंगे जहां हम उसको थोड़ा सा देखेंगे कि कहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, लेट मी एंड इट हियर। वैसे भी खत्म हो गया टाइम इसका।